Hello students, good morning to all of you and welcome back again on my channel. Today's video we will discuss feminist writers and the MCQs on the feminist literary theory and the basic questions as well as which is important authors जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फेमिनिस्ट राइटर्स पे क्वेश्चन। इस पे एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पीवाईक्यूज। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम सक्सेसफुली आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड द थ्योरी, एमसीक्यूज और द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अगर आप चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को टिल द एंड देखो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मे बी सम क्वेश्चन आर यू फील दैट रिपीटेड, जैसे मैंने पढ़ाया है फेमिनिस्ट राइटर्स को और उसमें डिस्कस किया था, बट ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सो try to understand and write down, take a pen and paper, and those are new author, those are new things you found, then you can write it. Which foundational 1792 text by Mary Wollstonecraft argue that women ought to have the education commensurate with their position in society. So the famous work, A Vindication of Rights of Women. Option number B is correct. Next question. Virginia Woolf's famous essay, A Room of One's Own, 1929, famously asserts that women must have money room of her own if she is to write. She is to write poetry, fiction, history, autobiography. So the correct option हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी, फिक्शन। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रूम्स ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ create a fictional character, illustrate the tragic plight of women of genius in Renaissance. Who is the character? So the Shakespeare की बहन Judith Shakespeare, it is a correct answer. तो हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। One is not born but rather became a woman is a landmark statement from 1949 feminist text by Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir के कौन से वर्क्स का ये स्टेटमेंट है? One is not born but rather became a woman, 1949. Feminine mystique, the second sex, sexual politics, gynocrates. So the correct answer is B, the second sex. ठीक है, next question. Simone de Beauvoir argued the second sex that patriarchy defined man as the absolute subject while women is defined at. तो women क्या है? The other, the equal, the companion, the object. जैसे absolute defined man as the subject, absolute subject, वैसे women is defined as the other. A option is correct here. Next question. In 1963 book by Betty Friedan का बुक है, ignited the second wave of feminism by discussing the problem that no name among American housewives. ठीक है, let's see guys. पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। The Betty Friedan second wave feminism डिस्कसिंग, जो प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम अमंग अमेरिकन हाउसवाइफ्स, 1963 का वर्क है। द फीमेल एनर्ज, द फेमिनाइन मिस्टेक, अगेंस्ट आवर विल ऑफ वुमेन बॉर्न, विच वन इज करेक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, फेमिनाइन मिस्टेक। ओके, लेट्स मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Who wrote influential radical feminist text, The Female Energy, 1970? Germaine Greer, Sulamith Firestone,
Kate Millett, Adriana Rich. So option number A is correct. Greer का ये work है. Next question. Kate Millett's landmark text Sexual Politics 1970 analyze करता है patriarchal power dynamic in the literary work of male authors like D.H. Lawrence, Henry Miller and one of more, and we find from our options. So ठीक है, let's stop. Kate Millett's landmark work text Sexual Politics analyze the patriarchal power dynamic in literary work and male authors like D.H. Lawrence, Henry Miller, and one more is there. So we have to find one more author from here. So option, let's see, Thomas Hardy, Norman Mailer, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald. Which one is correct? So the correct option हमारा हो जाएगा B. Norman Mailer. Next question. Helen Showalter introduced the gynocriticism as a literary framework. What does gynocriticism study? So what we studied under the gynocriticism, it is the question. So let's see the option. Male representation of the female character, women as a writer and the history, style and themes of women text, patriarchal structure in linguistics, psychoanalytic theories of general fluidities. So the correct is women as a writer and the history, style and themes of women's text. Next question. Helen Showalter, a literature of their own, divide British women writing into three historical phases. That is feminine, feminist, female. It is a PYQ of 25 Maharashtra set examination. Okay. Helen Showalter, a literature of their own, feminine, feminist, female. Next, who coined the term phallocentrism? First of all, try to understand what is phallocentrism, which is a main point of view. To explain how language is centered on the male masculine point of view, heavily critiqued by the French feminist. Helen Sixes, Jacques Derrida, Lucy Irigaray, Julia Kristeva. Which one is correct here? So, our Jacques Derrida, critiqued by French feminist Jacques Derrida. Next question. The French feminist essay by Helen Sixes argues women to engage in écriture feminine, women's writing, écriture feminine, using their bodily experiences. So which one is the work by the Helen Sixes? The Sex Which Is Not One, The Laugh of Medusa, Power of Horror, The Speculum of Other Women. Which one is correct? The Laugh of Medusa. Next question. Julia Kristeva introduced the concept of semiotic cora in linguistic as opposed to the symbolic, which is governed by. So Julia Kristeva introduced the concept, the semiotics cora in linguistic as opposed to the symbolic, which is governed by. Okay, so the concept of the semiotics. The mother's body, the law of the father, nature's rhyme, visual semantics. Which one is correct? So the law of the father is the correct option. Next question. Sandra Gilbert and Susan Huber wrote the monumental 1979 work analyzing 19th century women writer. What is the title? The Mad Women in Attic, No Women's Land, The Yellow Wallpaper, Shakespeare's Sister. Okay. So the correct option is The Mad Women in Attic, and The Mad Women in Attic have the subtitle also. And I think part 1's PYQ, I discussed what is the subtitle of this particular work. Next question. The title Mad Woman in the Attic reference which famous Victorian character? So this title is taken from the famous Victorian character. Which one is that? From which work? We have to find out. Estella hai from The Great Expectation, या Bertha Mason in Jane Eyre, Kathy in Wuthering Heights, Marian Halcombe in Women in White. So which one is correct? Actually, the Mad Women in Attic, it refers to the Bertha Mason, and Bertha Mason is the character in Jane Eyre. And Jane Eyre written by whom? You people tell me.
Okay, just test your knowledge and tell me Jane Eyre ये किसका work है. So the correct option is Bertha Mason, Jane Eyre. ठीक है. Next question. Alice Walker introduced the term womenism to address the specific intersectional experiences of working class women in Britain, black women or women of color, third world academic women, lesbian radical activist. So the correct answer हो जाएगा, the correct answer is black women या women of color. B is correct. Next question. Who coined the legal and theoretical framework of intersectionality? In 1989, they describe how race, gender, and class overlap. So, who coined the legal and theoretical framework of intersectionality? So, the bell hooks, Kimberly Crenshaw, Andrew Lord, Gayatri Chakravarti Spivak. So, the Kimberly Crenshaw is the correct one. Next, which iconic text by gender theorist Judith Butler argued that gender is not a subtle biological essence but a performative act. So, which is the iconic text by gender theorist Judith Butler? And she argued gender is not a stable biological essence but a performative act. So, Gender Trouble, Undergoing Gender, Bodies That Matter, Epistemology of the Closet. So, the correct answer is Gender Trouble by Judith Butler. Next question. Okay. Who wrote the influential 1984 post-colonial feminist book, Under Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses? Who wrote 1984's post-colonial feminist book, and the title book Under Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses? So the Gayatri Spivak, Chandra Tarpade Mohanty, Sarah Ahmed, Trin T. Mina. So the correct answer is Chandra Talpade Mohanty. B1 is correct. Let's move to the further next question. Okay. Okay. ठीक है. अगर वीडियोस अच्छी लग रही for my motivation and you people think that I make more and more such videos, then do like, share and subscribe. Okay. I hope that someone is claiming that आवाज नहीं आ रही. If feel like that, some to changes. ठीक. Adrienne Rich's essay Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence argue that heterosexuality is the natural biological certainty, a political institution designed to ensure male dominance, an inherently laboratory choice and minor psychological trait. So Adrienne Rich का essay है Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, जो argue करता है heterosexuality क्या है. What is the meaning according to the Adrienne Rich her essay Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence? So the correct answer is a political institution designed to ensure male dominance. Next question. ठीक है. Who is considered the first Indian woman to write an autobiography in Bengali? Amar Jiban, My Life, 1876, first autobiography in Bengali, which highlight the domestic confinement of women. Torudat, Rasundari Devi, Swarnakumari Devi, Pandita Ramabai. So the first Bengali एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते थे. तुरुदत्त को हम पढ़ के जाते हैं. तुरुदत्त के सब वर्क हमें पता है, तो ये वर्क उनका नहीं है. पंडिता रमाबाई आल्सो नॉट रिटन द सेम, इवन द स्वर्ण कुमारी देवी, बट द रसा सुंदरी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट बंगाली ऑटोबायोग्राफी अमार जिबान, टाइटल से ही पता चलता है, एंड माई लाइफ जिसका ट्रांसलेटेड टाइटल है 1876. नेक्स्ट क्वेश्चन. The pioneering 1887 feminist text by Pandita Ramabai का लिखा हुआ वर्क expose the harsh realities of upper caste Hindu widows. Okay. Which pioneering 1887 feminist text by Pandita Ramabai exposes the harsh realities of upper caste Hindu widows? So we have to tell the title of that work. Stree Purush Tulana, The High Caste Hindu Women,
क्राई द पिकॉक, अमर जीवन, ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्राई द पिकॉक बिलोंग्स टू द अनीता देसाई, अमर जीवन जैसे रस सुंदरी देवी का है। रहा स्त्री पुरुष तुलना, तो ये रमाबाई, पंडिता रमाबाई का नहीं है, ये हमारे जो है सोशियोलॉजिस्ट है, राष्ट्रीय सोशियोलॉजिस्ट है ताराबाई शिंदे, और हाँ बट सरनेम आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट ताराबाई शिंदे, ठीक है। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द हाई कास्ट हिंदू वेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी गाइस, ताराबाई शिंदे, वो yes exactly I'm talking about that. Tarabai Shinde wrote the Radical 1882 text comparing the social treatment of women and men in India. What is the title? So Stri Purush Tulana. It is a work by Tarabai Shinde, because as a literature student आपका किसी का और हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहा होगा ग्रेजुएशन में, तब आपने पढ़ा भी होगा, या जो भी हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें सोशल रिफॉर्मर पूछे जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव नॉलेज, ताराबाई शिंदे का ये स्त्री पुरुष तुलना ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुल्तान्स ड्रीम बाय रुकैया शेखावत हुसैन। रुकैया शेखावत हुसैन का वर्क इज ए हिस्टोरिक फेमिनिस्ट एटोमियन साइंस फिक्शन है। सुल्तान्स ड्रीम, स्टोरी दैट इमेजिन रिजर्व जेंडर वर्ल्ड कॉल्ड, सो द क्वींस डोमिनियन, लेडी लैंड एंड फेमटोपिया। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, लेडी लैंड, और क्या ऑप्शन था, हरलैंड, हरलैंड, फेमेटोपिया, लेडी लैंड, क्वींस डोमिनियन। तो रुकैया शेखावत हुसैन, सुल्तान्स ड्रीम, लेडी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ सगुना, अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ, 1895। हमें ईयर्स भी याद रखने, दैट्स व्हाई पर्पसफुली मेंशन हियर। अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ, सगुना, A Story of Native Christian Life, considered one of the earliest autobiographical novel written in English by Indian women. ठीक है, which one is the correct? तरुदत्त, कृपाबाई सिद्धनाथन, कॉर्नेलिया सौरभ जी। कॉर्नेलिया सौरभ जी पे क्वेश्चन था, एक्चुअली आई आल्सो सर्चिंग, बट आई थिंक one book I used when I was doing a preparation, and which is written by Indian English Literature, I think K. Srinivas Iyengar. Okay, something like that, the title of the author. तो उसमें कॉर्नेलिया सौरभ जी के बारे में डिटेल एनालिसिस उस बुक में दी रखी है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो आप बुक पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। सरोजिनी नायडू, और इन दोनों ने, सरोजिनी नायडू और कॉर्नेलिया सौरभ जी ने पॉलिटिकली कुछ राइट्स वगैरह दिलाने के लिए काम किया है। कॉर्नेलिया सौरभ जी ने भी, उसमें सरोजिनी नायडू भी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट करती है। बट हमें पहचानना है सगुना स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ किसने लिखा है, इंडियन वुमेन है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। तो करेक्ट आंसर है कृपाबाई सिद्धनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरू दत्त सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोएट्री वॉल्यूम अ शेप ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड 1876 contains translation of, so French poet in English, Sanskrit epics into French, या Bengali folk song into English, या English ballads into Bengali. So the correct answer is French poets को उन्होंने क्या किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उन्हें फ्रेंच आती थी। और कैजुराना ट्री उनका बहुत फेमस वर्क है। हाक लक्ष्मण हाक, also the again poem of the तरुदत्त। बीएन का ए नाम, इस नाम का नॉवल भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। हाँ, वही क्वेश्चन आ गया, अवर कैजुराना ट्री, विच पोम बाय तरुदत्त ब्यूटिफुली ब्लेंड द चाइल्डहुड मेमोरीज इन द पोम ऑफ अवर कैजुराना ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू, वाइडली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पब्लिश हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स इन 1905। उन्होंने अपना पहला पोएट्री कलेक्शन पब्लिश कराया था 1905 में। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कौन सा था वो वर्क? द बर्ड ऑफ टाइम, The Golden Threshold, The Broken Wings, The Father of the Dawn. So the correct answer is The Golden Threshold. Next question, guys. Who was the first Indian female barrister? जो मैंने जैसे कहा, who was wrote the significant short stories and the autobiographical book like India Calling 1934. Sarojini Naidu, Cornelia Sorabji, Muthulakshmi Reddy,
Kamala Devi Chattopadhyay. So the correct answer is India Calling, written by the Cornelia Sorabji. Next question, guys. Okay. Toru Dutt, Sarojini Naidu and Kamala Das पे बेस्ट क्वेश्चन है. Toru Dutt's unfinished English novel जो उनके posthumously after death publish हुई थी 1878 में, and the only novel she wrote, that is Bianca or the Young Spanish Maiden. ठीक है, A option is correct. Next question. Toru Dutt's Ancient Ballad and Legends of Hindustan. Toru Dutt's Ancient Ballads and Legends of Hindustan 1882 features poem based on the stories from the Ramayana and Mahabharata, which legendary woman is celebrated for her absolute devotion to Savitri. Okay. So, Sita, Savitri, Shakuntala, Oma. Okay. ठीक है. A legendary woman celebrated her absolute devotion to the Savitri, and she wrote the Ancient Ballads and Legends of Hindustan 1882, features poem based on the stories of Ramayana and Mahabharata. So the character is the Savitri. B1 is correct. ठीक है. Palanquin Bearer is highly rhythmic musical poem है, and the line like हाँ, इस पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. देखो, पैलेंक्विन बेयरर्स किसने लिखा है, या लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलाउंग, ये पोम किस लाइन की है, या ये पोम किसने लिखी है, या ये लाइन किस पोम से है और वो पोम किसने लिखी है. तो पैलेंक्विन बेयर हमारे जो है सरोजिनी नायडू ने लिखी है. लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलाउंग, ये उस पोम का लाइन है, पैलेंक्विन बेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sarojini Naidu's poem The Bazaar of Hyderabad, vivid scenery imaginary to evoke. So what kind of the imagery is that? Pre-colonial Indian marketplace and the local craftsmanship, industrial factories, British architectural lens, war campus. So the correct answer is pre-colonial Indian marketplace and the local craftsmanship. A1 is correct. Next question. Kamala Das wrote under her pen name. What is the pen name of Kamala Das? In her native Malayali language. Kamala Surya, Madhava Kutty, Alfonso Sujata. So the Madhav Kutty is the correct. Kamala Surya actually it is. Kamala Markande is there and Kamala Das is there. ठीक है, so Madhav Kutty. Next question. Okay guys, let's see. We will complete the near about 50 questions in this session. And let's see. Okay. Which 1976 autobiography by Kamala Das shocked conservative reader with its honest depiction of female desire, marital disillusionment and extramarital relationship? My Days, My Story, Inner Courtyard, Childhood in Malabar. So the correct answer is My Story. Next, don't confuse between the Kamala Das and Kamala Markandeya. Next question. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, writing 2, dream in 1. These lines open which milestone? Confessional poetry by Kamala Das. Kamala Das confessional writer मानी जाती है. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, writing 2, dream and dream in 1. So an introduction, The Freaks, The Dance of the Energy, Summer in Calcutta. So which one is correct? So an introduction is the correct option. Next question. In Kamala Das' poem, The Dance of the NHS, the sterile, frantic dance of the NHS serves as the metaphor for joyful festival celebration, the poet's own inner void, emotional and fulfillment and empty marriage, political oppression and environmental devastation. So the correct answer is B. Next question. Okay. Which Kamala Das poetry collection published 1965 her as premier modern confessional voice in Indian English literature? So the correct answer is B. Summer in Calcutta. Next question. In Kamala Das' bitter poem, The Old Playhouse, the playhouse of the mind is reduced to a dark world filled with the dust because of. ठीक है, Kamala Das' bitter poem, The Old Playhouse. Okay. The playhouse
of mind reduce the dark world feel. Okay. So the correct answer हो जाएगा her husband's complete emotional and intellectual egoism and demand her total submission. Next question number 40. Anita Desai's breakthrough 1963 psychological novel focuses on Maya, a lonely woman married to unfeeling rational lawyer named Gautama. What is the title of that question? ठीक है, उसका नाम क्या है? अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक. अनीता देसाई का साइकोलॉजिकल 1963 का माया का कैरेक्टर है, उसमें उसका हस्बैंड है एंड रोमांटिक गौतमा. सो क्राई द पीकॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anita Desai's Cry the Peacock. Maya is driven to insanity, murder by a dark childhood prophecy of doom predicted by palm reader, albino astrologer, wandering monk, या blind beggar. So which one is correct? So the correct is albino astrologer. Next question. Which Anita Desai's novel set in Calcutta traces the existential angst of सिबलिंग निर्मोद, मनीषा एंड आमला? ठीक है, अनीता देसाई का नॉवेल है, कलकत्ता की सेटिंग है, सिबलिंग्स है निरोड, मनीषा एंड आमला. ओके, सो फायर ऑन द माउंटेन, ओके, वॉइसेस इन द सिटी, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फेस्टिंग. विच वन इज करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज वॉइसेस इन द सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अनीता देसाई की नॉवल है फायर ऑन द माउंटेन, सेंटर अराउंड द शेड्यूल्ड डिटैच लाइफ ऑफ ओल्ड वुमेन. नंदा कॉल विच हिल स्टेशन? सो कसौली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अनीता देसाई's novel explore the deep-seated childhood memories and adult reconciliation sister Beam and Tara in Old Delhi? तो Baumgartner's Bombay, Clear Light of Day, In Custody, Fasting Feasting. So the correct answer is Clear Light of Day. Next question. अनीता देसाई का फास्टिंग फिस्टिंग ये वर्क है शार्प कल्चर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिस्ट्रिक्टिव पेट्रियार्कल डोमेस्टिक एनवायरमेंट ऑफ इंडिया एंड द कंज्यूमरिस्ट एलाइनेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा. विच वन इज द करेक्ट? ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. शशि देशपांडे ऑन द प्रेस्टिजियस साहित्य एकेडमी अवार्ड. साहित्य एकेडमी अवार्ड्स में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अब तक नहीं देखी है तो जरूर देखो. इट विल बी हेल्प यू in examination. Okay, 1980s feminist novel whose title is derived from the John Keats poem Hyperion. John Keats के poem Hyperion से उन्होंने अपने वर्क का टाइटल लिया था. इस वर्क के लिए उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1980 में. तो उस वर्क का नाम क्या था? शशि देशपांडे. रूट्स एंड शैडो, दैट लॉन्ग साइलेंस, डार्क होल, नो टेरर्स, स्मॉल रेमेडीज. विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट इज दैट लॉन्ग साइलेंस. Question number 47. Who is the female protagonist of Shashi Deshpande की जो वर्क है That Long Silence? Educated writer who suppressed her voice to play the perfect traditional wife to her husband Mohan. So Saru, Jaya, Indu या Madhu? So the correct answer is Jaya. Next question. Shashi Deshpande का वर्क है The Dark Hole, No Terror. Saru faces a regular sexual and साइकोलॉजिकल अब्यूज. ठीक है, तो अभी हमने देखा जया ये कैरेक्टर दैट लॉन्ग साइलेंस में है. तो सरू का जो कैरेक्टर है वो सेक्सुअल अब्यूज फेस करती है. उसके हस्बैंड का नाम मनोहर है एंड ड्यू टू हर सुपेरियर स्टेटस. तो कारपोरेट एग्जीक्यूटिव, मेडिकल डॉक्टर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है या आईएएस ऑफिसर? कौन है वो? उसका हस्बैंड. तो वो है एक मेडिकल डॉक्टर. Next question. Which novel is Shashi Deshpande's depth work centering around the educated woman named Indu who returned to her large ancestral house and fight for individual freedom? तो The Binding Wine है, Roots and Shadows है, Matter of Time है या Moving On? So the correct answer is Roots and Shadow. Sir, ठीक है. Okay, fine. Last question बघूया.
Shashi Deshpande's novel The Binding Wine handles the highly sensitive and taboo theme. Okay, The Binding Wine handles the highly sensitive and taboo financial scamming, marital rape and silence surrounding sexual violences, political corruption and intercaste elopement. So the B answer इसका हो जाएगा. ठीक है guys, till the end. Again मैं ऐसे ही बहुत ही important और कुछ MCQs लेके आऊंगी कल के वीडियो में. ठीक है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अपकमिंग वीडियो जो है आपको उसके नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.